Okay, Assalamu alaikum. I'm Dr. Ramla. Today we are going to start with our second part of the autopsy lecture. So that the objective of today's lecture are at the end of the lecture, you'll be able to describe how we perform the external examination, different techniques of the autopsy, type of the incisions, hazards of the autopsy room, and postmortem artifacts. So let's do this. So as we are all done, previously, regarding the autopsy protocol, that authorization, how we go for the legal formalities, ठीक है ना? तो आज हम करेंगे कि then दादी after doing all that thing, after registering each and every documentation, then we start up with the external examination. So how we perform the external examination, it's basically include the examination of the following things. That is basically the cloths which has been worn by daddy at the time of receiving of the dead body. As you remember, कि हमने कहा कि crime scene पे से हम as it is, along with the ornaments and whatever the belongings of the person, the demised person, we just take it and wrap it in the plastic bag and shift it to the morgue. ठीक है जी. Stains of the mud, blood, urine, stool, इसका examination देखते हैं. Body orifices, finger, toenails, injuries, surgical interventions अगर कोई हैं, rigor mortis, postmortem staining, decomposition, and other changes. So the physical examination of the clothes, basically what we do, like the main objective of that examination of the clothes is to collect the material evidence on it. Basically, we look or examine without touching anything, initially we just look for the things, any kind of हम उसमें mention करते हैं अपने performa पे कि name of the clothes, that is shirt, trouser, shalwar, printed, अगर female है तो printed shirt and shalwar है वो mention करेंगे. Shirt and trouser अगर है तो color उसका mention करेंगे. ठीक है, color of the clothes है, whether dirty or clean ये mention किया जाएगा. Loosed or zipped है, like अगर कोई torn button है कुछ है तो वो that will show that the mark of resistance, तो वो आप उसमें मेंशन करेंगे. Any damage on that the cloth, whether torn or not, whether there are cut or holes on them, ठीक है, उसको देखेंगे. Whether these corresponds in size and site to the body injury, because when the body is lying, that the position little bit changes, इसलिए कि अगर incident supine में हुआ है or standing position में है, then when you lie down the person, so there was light differences occurs, but the size and shape or site को correspond किया जाता है, वो हमें बहुत अच्छी तरह से देखना होता है. If cut holes and tears are present, encircle and sign them. ठीक है, and mention them on your performa. Then whether they are blood stained, soaked and smeared, ठीक है, any other stain other than the blood, vomiters, feces, semen or the grease if present, they should be preserved. If the clothes are stained and wet, these should be air dried. क्या होता है कि plastic bag में हम नहीं रखते because we are going to lose that like evidences. What we usually do अगर वो wet है, because अगर आपने body cold storage से निकाला है तो sometime it's wet, ठीक है, because आप thaw करते हैं पहले properly, because to look for that the time since that वैल्यूएट करने के लिए that the rigor कौन से स्टेज पे है, look for that the rigor. ठीक है, और अगर आप उसका वेट नहीं कर रहे तो you cannot comment on the rigor and you will just performing that the autopsy. but लेकिन clothes आपने जो है जब उसको remove करते हैं then you have to look for it and just air dry करते हैं. ठीक है, note any tire marks कुछ भी हैं उनको circle करते जाते हैं आप. ठीक है, any foreign material like broken glass, hair when present are collected and in a separate container or so. Examining these clothes should be signed and handed over to the police officer after getting their signature on the autopsy register. Sometimes the clothes have already been removed by the initial medical चला गया, so they usually do the examination. ठीक है, तो कभी कभी वहां पे भी हो जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि all the time, every time what you will do,
You will take out that the clothes by from the either from the site. कभी भी जो evidences होते हैं उन area को we never touch that those areas, like अगर if the cut is there or any kind of the tear is there, so you will try to take it out from the sideline or the arm line जो होती है उसके साथ आप side से उसको cut करके उसको उतारते हैं, then make it like air dry and keep that evidence in the paper bag, not in the plastic bag, because plastic bag will causes the moisture and will destroy that your evidence. ठीक है? Then physical examination of the body surfaces or that the external examination. There should be through examination, thorough examination or the inspection of the body, the naked eye as well as by that the magnifying glass. ठीक है जी? After removing the clothes, you start examining the body proper तरीके से कि look for any kind of the abrasion, grazes, bruises. चीजें check की जाती हैं. The body is inspected for from the head following entry of the skin, postmortem lividity अगर आपको अपसाइड डाउन हुई भी होगी बॉडी, ठीक है, और आपको ये अज्यूम किया जा रहा होगा कि नहीं जी डेथ जो है वो करंट हुई है, तो लिबिडिटी चेंजेस, ठीक है, वो आपको कोरिलेट करना होता है टाइम सिंस डेथ से. कलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कैल्प, ठीक है, वो आप देखेंगे कि कैसा है, किस तरह का है, वेदर एग्जामिनेबल बेल्ट उसका बेल्ट और जो है क्या कहते हैं देखेंगे आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक है. कलर चेंजेस ऑन द फेस, वेदर पेल और कंजेस्टेड है. आईज देखेंगे वेदर ओपन और क्लोज हैं, कंजेस्टेड है और पिटिचल्स प्रेजेंट है कि नहीं. लाइक समटाइम्स लाइक यू नो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस. लाइक पिटिचियाज आप उसमें देखते हैं कि लाइक जो भी आपके एस्फिक्सियल डेथ होते हैं, समटाइम्स दैट द डिफरेंट क्या कहते हैं पॉइजन्स की वजह से आई चेंजेस आ जाते हैं. उसके अलावा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में है पिंक कलर की जो है वो उसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी क्रिएट होती है. सो दीज आर द सर्टेन पैरामीटर्स ऑन विच यू विल एग्जामिन एंड लुक फॉर दैट द बॉडी, ठीक है ना. समटाइम्स यू हैव टू कोरिलेट विद दैट द हिस्ट्री कि अगर एक्सीडेंट है, इंसिडेंट्स है, तो आप उससे कोरिलेट करते हैं. लाइक लगेज और मार्क ओवर द नेक कि कैसा था, किस तरह का है. आप देखेंगे कि थ्रॉटलिंग का केस तो नहीं था, आपको ये सुसाइड प्रिटेंड कर रहे हैं. सो यू हैव टू लुक एंड कोरिलेट विद योर document as well. ठीक है. The physical examination of the body surface is again continuation that the mouth, and you will look for the mouth. अच्छा जी, hair I just forgot to tell you one thing कि जब आप hair examine करते हैं you will pluck that the of the hair scalp पे pluck out करते हैं और उसको भी preserve करके seal उसमें भेज देते हैं, ठीक है, for the drug or the chemical analysis. Mouth, whether if the cases of that the like you know poisoning अगर आप suspect कर रहे हैं, mouth whether open or closed, presence of froth or any other foreign material, ठीक है, like drowning है, उसके अलावा आपका asphyxial death है, there would be the defined froth can be present in in the mouth area, तो आप वो भी notice करेंगे. Length and weight of the body वो measure किया जाता है. Circumference of the head and crown heel length should also be noted in case of the autopsy of infant जो है body में जब हम करते हैं तो हम उसमें entire head का जो है crown circumference लेते हैं और crown heel length से उसका age identify करते हैं. The physical changes that occur in the dead body after the death, like stage of hypostasis or the postmortem lividity, उसको नोटिस किया जाता है. राइगर मोर्टिस एक्सटेंड ऑफ द डेवलपमेंट कहाँ से हुई, लाइक हेड टू टो, फिर टो टू बैकवर्ड जाती है, खत्म होती है. Putrefaction, any kind of that stage of decomposition can be appreciated on the body and can be written down in your like you know in your postmortem document. Evidence of the medical and surgical treatment, any kind of that the scar or that the like you know can intimate कि जिसका previous surgery को हुआ है कि नहीं हुआ है, that you have to mention in your like you know in your performa. Injuries on the body, as if you remember मैंने आपको दिखाया था कि injuries जो है वो body figures बने होते हैं front and back. There you have to like you know आपने उधर mark भी करना होता है और define करना होता है, उसका extent बताना होता है कि how much in that the diameter or that the like you know in the length
of the injury or the cut or the wound. Examination of the body orifices, opening, check किए जाते हैं. Look for the injury or the any kind of the foreign material, like in cases, especially in that the criminal abortion, ठीक है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. In cases of sexual assault, maybe you have to take that the like swab from that the vagina, वो भी आप लेके उसमें उसको सील करके भेज सकते हैं. ठीक है. It is prudent to get that the whole body X-ray in case of multiple fracture, bomb blast, suspected infanticide and death due to the criminal violence or by advanced stage of the putrefaction. ठीक है ना. Ideally आपको क्या करना चाहिए, whole body X-ray जब आपको अगर multiple if you're suspecting कि जी injury assault की वजह से multiple fracture हो सकते हैं, then you will go for that the X-ray before starting your autopsy. After inspection, body is palpated to locate any foreign body like bullet under the skin. ठीक है ना. वैसे तो बुलेट मार्क आपको हमेशा जो है वो उसकी विंडो ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हर चीज को पल्पेट करके जरूर देखते हैं. Now we come to the different techniques जो अडॉप्ट की जाती हैं for to perform the autopsy. That is the en masse, that is we call laterally, en bloc, that is called bones, individual organ, that is called vercos, and in situ, that is Rokitansky. ठीक है. So yeah, basically these are the 4 techniques through which we perform our autopsy. So let's see that what we mean by that, the technique of vercos. Organs are removed one by one. ठीक है. एक एक organ हम उसमें से निकालते हैं. Like पहले आपने ले लिया कि जी आपने अब thorax कर रहे हैं, तो you will take out the lungs and heart and separately हर organ को, stomach को निकाल लिया अलग से. ठीक है. Each organ can be studied in detail. मेरिट इसका यह है like advantage. Disadvantage क्या है, anatomical pathological interrelationship जो है वो इसमें lost हो जाता है. ठीक है जी. Rokitansky क्या है, basically it's the technique is characterized by in situ dissection, like spread of infection है, certain HIVs अगर आपको पता है कि suspected है, और इसके अलावा AIDS का patient है, or like as in that the COVID, even like we are not performing that the open autopsies, we are doing that the Rokitansky technique right now for that the COVID. ठीक है. suspect अगर हम करते हैं तो. उसके अलावा demerit क्या है, organ cannot be studied in detail definitely because within the body हम ये सारी चीजें एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसी में से सैंपल्स कलेक्ट करके भेज देते हैं, पूरा एक्सपोज आउट नहीं करते.